So, fine, we will discuss what is the meaning of English proficiency. So, firstly, English language proficiency is an ability of the student to use the English language to make and communicate meaning in spoken and the written context while completing completing their program of study. So, if this what is the meaning of this English proficiency? The meaning is it is an ability. एक ability दी जाती है student को. And it's a chance for ability. हम वो सिखाने की कोशिश करते हैं so that student can use the English language. इससे क्या होगा कि student English को as a language use करके and they can communicate their message. Communicate करना अपने ideas को एक जगह से दूसरी जगह एक person अपने ideas को convey करना with a meaningful and other person will understand the meaning and in spoken and the written context. हम किस पे फोकस कर रहे हैं? Spoken and the written context. कि हम बोलकर बात को कन्वे कर दें इंग्लिश में और लिखकर. और यही हमारे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लीट द प्रोग्राम ऑफ स्टडी. So there are certain importance of English language. So we will discuss about this importance of English language. The first importance is English language play an essential role in our life as it helps in communication. एक बहुत important role play करता है English language. इसलिए essential role in our life. इसलिए it help communication process में कि because through this, we can communicate easily and to transfer the idea. The second point is it is a main language for studying. And nowadays, एक main language बन गया है study का any subject all over the world. हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है. तो this is the main language for studying at any all over the world. English is important for the student as it is broaden their mind, develop emotion skills, improve the quality of the life by providing jobs and opportunity. तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट है. दिस इज द मेन लैंग्वेज फॉर स्टडी. एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है वो ऑल ओवर वर्ल्ड क्योंकि हम इसके थ्रू हम बहुत सारी नॉलेज ग्रैब करते हैं और डेवलप द इमोशंस. इससे हम अपने इमोशन और अपना माइंड ब्रॉडर करते हैं क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उस चीज़ को समझते हैं, नॉलेज एनहेंस करते हैं, उससे हमारा माइंड शार्प होता है. हम एजुकेशन में भी यही करते हैं ना, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, हमें नॉलेज एनहेंस होती है, हमारे इमोशनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होता है बाय प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज. और ये ऑल्सो हेल्प करती है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी में क्योंकि अपॉर्चुनिटी में बिकॉज आप देखोगे देयर आर almost every vacancy have done one objective that you should candidate should fluent in English. So English has that much important that in any field if you are going and if you want to working in accounts like you are from the Bcom and you want to work on finance and everything. So accounting, business. So in these field also the you your English should be fluent and you should have a good English language proficiency so that you can convey your idea. You should be good at communicating uh, your ideas by in a spoken form or the written form. And even in the reading form also, it is very important. And for any language, अगर आप कोई language सीखते हैं, so you should be fluent. And there is a process to learn the language. हम बोलते हैं कि LSR with the help of LSRW skill, we can learn the language that is listening, speaking, writing एंड रीडिंग. तो ये 4 स्किल्स होते हैं. इसके थ्रू आप अगर आप उन चारों चीजों में एक्सपर्ट होते हो सो दैट यू कैन लर्न द लैंग्वेज ऑल्सो. तो LSRW हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं द थर्ड पॉइंट है द यूज ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इज ग्रोथ विद टाइम बिकॉज इट इज ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन मेनी कंट्रीज. क्योंकि एक हम इंटरनेशनल ना बोल के दिस इज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज एक ग्लोबल लैंग्वेज तो हर जगह पे एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज बन गई है सो दैट यू कैन शेयर योर थॉट
within a country or within even state में भी जैसे आप you are living in Delhi तो आप एक language बोलते हो अब जो बाहर के लोग हैं even within Delhi also there are many people who speak very different languages. So with the help of English we can communicate because this is a common language for the all. So now English becomes a global language. So if you want to go out from the country and at that time also you need one expertise in language. The English language is an expertise. The third point है the use of English as an international language growing with the time because it is the only medium. We already discussed the only medium. Fourth point, English is also used widely in a literature, social sections to publish books. Most of the writers write in English language due to the vast इंटरेस्ट तो क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आजकल लिटरेचर और मीडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लाइक आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हो तो उसके अंदर अधिकतर चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलती है आई नो देयर इज अ हिंदी सीरीज ऑल्सो अलग अलग लैंग्वेज की बट अगर आप मेजोरिटी पे जाते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट इज ओनली इन इंग्लिश एंड सो तो यहाँ पर भी इम्प्रूव भी करती है और आप अगर उनको देखना चाहते हो आप कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें आप सीरीज एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म से देखते हो एंड सेकंड इज मीडिया सेक्शन media section if media section is also a literature like novels poetry so these are the things you get from the or you get from the language of English to publish books. Most of the writers write in a language due to the vast. So ये और the more इसलिए क्योंकि majority of the people are start wants to read in English तो बहुत सारे राइटर लिखते भी इंग्लिश के अंदर में तो अब आता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या ऑब्जेक्टिव थे फर्स्ट क्या है ये ऑब्जेक्टिव है तो एनहेंस वोकैबुलरी जो हमारे कोर्स का है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो मतलब यू शुड नो मोर वर्ड्स more good words about English, yeah, so that you can use the word. And अगर आपकी vocabulary अच्छी है तो you can read a lot. Okay. Sound vocabulary able the listener to communicate effectively and proportionately in a real life situation with the sound structured vocabulary. English can be used effectively for the study purpose across the curriculum. Good vocabulary also develop interest in appreciation of एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर तो क्या है कि जो साउंड वोकैबुलरी है एबल द लिसनर इस लिसनर को क्या हेल्प करता है कि टू डील कम्युनिकेट विद अ रियल लाइफ सिचुएशन फिर उसके बाद है विद साउंड स्ट्रक्चर वोकैबुलरी इंग्लिश कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर स्टडी पर्पस जो है जो इंग्लिश है वो साउंड वोकैबुलरी में भी हेल्प कर साउंड स्ट्रक्चर वोकैबुलरी इंग्लिश में यूज इफेक्टिवली बाय स्टडिंग पर्पस हमें जैसे हमें अच्छे लगेंगे तो हमें स्टडी पर्पस के लिए भी बहुत इम्प्रूव करता है गुड वोकैबुलरी ऑल्सो डेवलप द इंटरेस्ट और अप्रिशिएट और आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप करता है किसके अंदर लिटरेचर के अंदर ठीक है तो सेकंड पॉइंट है मोटिवेट द स्टूडेंट while teaching English, students should be motivated by creating awareness about the importance of English language in different aspects of life. तो ये एक मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती रहती है तो स्टूडेंट गेट मोटिवेटेड उनको लगता है कि हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छी जॉब मिलेगी ना तो बहुत सारी चीजें आपको क्रिटिक आपको नई नई अवेयरनेस के बारे में भी पता चलता है नई चीजों के बारे में पता चलता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंटेंट आर अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली तो आपको आपकी नॉलेज भी एनहांस होती है विद दिस फैक्टर तो इंग्लिश हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड तो स्टूडेंट शुड बी टॉट द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ विंडो टू द वर्ल्ड अगर हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आज के टाइम में एक खिड़की की तरह काम करता है क्योंकि आपको वर्ड की जानकारी चाहिए तो आपको एक खिड़की चाहिए जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड करते इफ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश यू इफ यू आर अ प्रोफिशिएंसी had a good proficiency in an English so that
आप एक जैसे विंडो में झाँक सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो student could be taught in English language in a window. It is a drive through which they could travel everywhere in the world. वो क्या है कि it is drive through which could travel, और इसके थ्रू आप all over world में घूम सकते हैं. With the help of it, they can explore immerse world of knowledge. तो इसके थ्रू आप क्या सकते हैं, आप उसके थ्रू आप इतनी नॉलेज ग्रैब कर सकते हो, जैसे एक विंडो मिल जाती है, आप उस दुनिया के बारे में जान सकते हो, आपको एक नॉलेज हो जाएगी, और आप ट्रेवलिंग का भी जिनको शौक होता है तो इसके लिए. तो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. If a teacher should always emphasize the teaching a student with a proper grammatical structure with the help of the student to write, compose, correcting proper using appropriate pronunciation mark and capital letters. तो इसमें क्या है कि student always emphasize on teaching us to proper grammatical structure. तो grammatical structure हर टीचर को एक grammatical structure पे फोकस करना चाहिए, so that this help the student to write compose it correctly. और उससे क्या है कि जिससे कि स्टूडेंट जो है सही से लिख सकता है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, और उससे वो अच्छी प्रोनाउंसिएशन भी आएगी. अगर वो लिखेगा अच्छा, ग्रामर सही रखेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा. तो फोर्थ पॉइंट है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. तो imagination and creativity is a teacher can able student to express themselves creatively and imaginatively. Proper use of language can increase student ability to use planning, drafting and editing to improve their work. तो क्या है कि टीचर विद ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव करती है, बिकॉज द टीचर कैन एबल द स्टूडेंट. वो क्या करेगी कि स्टूडेंट teacher can able the student to express themselves creatively and imaginatively. Use the proper use of language can increase the student ability to use planning, drafting, and editing to improve their work. तो टीचर क्या है कि स्टूडेंट आपकी क्रिएटिविटी और ये और इमेजिनेशन को बढ़ाती है. एंड प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज कैन इंक्रीज द स्टूडेंट. ये लैंग्वेज क्या है, स्टूडेंट increase the student ability to use the planning, drafting, and editing to improve their work. फिर है लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ इंटरनेट. टीचर टीचर should create awareness.
Last point is related to the use of internet. Teachers should create awareness among the students. There are many English apps, dictionary videos, audios, etc. They can use from the internet. Learning English will help them to use these facilities easily. So these are the five. These are the five topic you have to cover in this unit. In this syllabus, the first topic is reading comprehension. So, what is reading comprehension? तो अगर आप रीड करते हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फर्स्टली गो टू द टेक्स्ट फाइंड द मेन आइडिया कि वो टॉपिक है किसके बारे में तो इट इज वेरी एसेंशियल टू नो द मेन आइडिया देन you have to take guessing a meaning of unfamiliar words from the context. आपको क्या करना है कि गेट द अनफेमिलियर वर्ड जो आपको अलग से अलग वर्ड मिला है, उनको अंडरलाइन कर लीजिए तो सो दैट आपको ये पता चलेगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी एंड यू गेट टू नो द मीनिंग क्या है रीडिंग स्किल्स so firstly there are key points that you have to focus while reading the comprehension. First is find the meaning of the text. So what are the main idea of the text? Guessing the meaning of the unfamiliar words from the context. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से अनफिमिलर वर्ड हैं कॉन्टेक्स्ट से तो एंड देन थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रिटेटिंग रेफरेंस वर्ड लुकिंग फ्रॉम द कीवर्ड्स एंड उसमें क्या है कि अनफिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटिंग द रेफरेंस वर्ड और उसके बाद क्या करना है अंडरस्टैंड करना है और इंटरप्रिटेट करना है जो रेफरेंस वर्ड है फोर्थ है लुकिंग फॉर द कीवर्ड्स so the keywords थे that you have to focus. What are the keywords that you have focused? Making the reference and the drawing conclusion. And उसके बाद इंटरफेरेंस एंड द ड्राइंग कंक्लूजन आपको क्या है कि आप उनको इंटरफेरेंस करना और उसका कंक्लूजन निकालना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट तो अब हम कोई भी टेक्स्ट अगर रीड करते हैं तो हम उसको कैसे स्टार्ट करते हैं है ना क्या प्रोसेस होता है तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं So how we start the reading passage? The first is firstly reading. Firstly, you have to. So how we start the reading passage? That is when there are four steps that you have to focus while reading the text. So firstly, reading a passage as well as the answer without thinking too much that the meaning of the word and the phrasing which you look difficult. In the first reading, you just find out what are the passages about. Meaning, मतलब क्या है कि when you read the text, firstly आपको उसको एक बार go through करना है. Don't stress on too much क्या उसका मीनिंग है जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट और उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है कि आपको ये पता चल जाए कि व्हाट इज द टॉपिक इज अबाउट देन सेकंड स्टेप क्या होती है अंडरलाइन द वर्ड दैट यू फाइंड डिफिकल्ट एंड स्टार्ट गेसिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय रीडिंग अगेन तो सेकंड पॉइंट क्या होता है यू अंडरलाइन द वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड लगे उनको अंडरलाइन करना एंड थोड़ा अगर आपको मीनिंग पता है दैट इज वेरी गुड अगर नहीं पता यू जस्ट इंटरप्रिटेट गेसिंग द मीनिंग कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सेंटेंस को देखकर मीनिंग समझ आ जाता है तो दिस गेसिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय रीडिंग अगेन फिर थर्ड टॉपिक है थर्ड सेट है each passage has some vocabulary exercise go back to the questions of the passage and try to find out where you get the answer of the question हर पैसेज का ना एक vocabulary exercise होती है जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनका मीनिंग तो आप उनके पैसेज पे जाओ और उसमें देखो कि क्या पता आपको कुछ मिल जाए जो उससे रिलेटेड था सेम था और उसको ग्रो थ्रू करो और उसको पढ़ो और शायद उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिले तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो उसी से सॉल्व हो जाता है फिर I give a final reading of the paper and try to find out answer, understand the new word. तो फिर उसके बाद एक बार दोबारा से रीड लगाओ टेक्स्ट को और try to understand the text और फिर उसके क्वेश्चन पे आंसर डोंट
Just look at the questions कि उसका word उस passage से similar हो रहा है आंसर देना. That is a very wrong way. You just read the text first. And जब हम first बार reading करते हैं तो उसको बोलते हैं skimming style of reading. So, so this one. So ये passage है first. So despite growing literacy among the women, मैं पढ़ रही हूँ. तो सो दैट आपको मैं समझाऊं और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश. डिस्पाइट ग्रोइंग द लिटरेसी अमंग द वुमेन, इट इज मेन हु डिसाइड वेदर अ वुमन विल वर्क आउटसाइड द हाउस और नॉट द आफ्टर मैरिज. गर्ल विल जॉब. तो ये क्या है कि ग्रोइंग लिटरेसी अमंग द वुमेन, जो वुमेन के अंदर लिटरेसी इससे रिलेटेड है. इट इज अ मैन हु डिसाइड हु विल. तो क्या होता है कि मैन डिसाइड करता है बहुत जगह पे कि और वुमेन को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Girls with jobs and career are expected to set their aside time. और कई बार ऐसा होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनको करियर भी अपने जॉब के अपनी शादी के अकॉर्डिंग ड्रॉप शादी की वजह से ड्रॉप करना पड़ता है. उनको ऐसा डिसाइड करना पड़ता है कि उनकी शादी इफेक्ट ना हो. तो या फिर वो पढ़ती सी हैं तो सो दैट ही शी कैन फाइंड अ गुड suitable match. One comes across community, modern educated, third women, men who will tell you what to will tell you that they will marry girls who are professional with job. So she will not work after marriage. Why? Obvious, because even through being modern, uh, being modern should means having a mindset that recognizes the need and the right of women. Once she enter your home as a bride, she is expected to give them up and and cater to the needs for her husband and his family. So women can work outside the house if the husband needed the income. But otherwise they must be content to the work inside the home. For that, it is considered their true role of destiny. तो अब इसमें क्या है कि आप ये पैसे समझ रहे हैं कि this passage is about girls and their careers just because of their suitable match, and there are so many things that you have to focus. Girls have to focus and उसके बाद ही वो डिसाइड करती हैं. एंड बहुत सारे केसेस में वो तो देयर आर 4 क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर. दिस इज योर होमवर्क. आई विल शेयर दिस लिंक. आई विल शेयर देयर. आई मेड वन ड्राइव. उसमें मैं ये सब चीजें शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन एक्सेस द दिस and all the answers are there. So you can solve and get the answer. Now the time. Now I know this is your first class and we start very class start at late. From the next class we will be punctual and we'll start our class quickly and try to cover the syllabus as soon as possible.